Welcome back to my YouTube channel. Hello my dear Sraddha family. Here I am back again. आज लेट हो गया because literally I started in the morning at 9 a.m. today and I ended my day at 9 p.m. There were certain things जो मुझे ख़त्म करना था, इसीलिए I was like कि जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या करना है. नहीं होते 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 9 हो गया सब कुछ ख़त्म करने के लिए. कल मुझे फिर ऑफिस जाना है. So that is why I'm a little stressed and worried. इसीलिए आज मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया ताकि ख़त्म हो जाए and then कल मैं आराम से ऑफिस का काम कर सकूँ, मतलब ऑफिस जा सकूँ एंड ऑफिस रिलेटेड जो भी है वो सब कर सकूँ. ओके ग्रेट, यहाँ पे आ रहे हैं लोग. टुडेज टॉपिक इज setting boundaries for yourself. तो आज I want to talk about this anecdote. आज ही मेरे साथ हुआ. I joined this project yesterday. समझ रहे हो ना? Yesterday मतलब Monday को start हुआ है. My lead is asking me, give me a tentatively, give me a timeline by which you can complete the deliverable, which has like 6 different business processes which involves around 8 to 9 different modules. इसको मुझे स्टडी करके उसका चेंज इम्पैक्ट एनालिसिस बनाना है. इट इज़ लाइक एन very exhaustive Excel sheet and I was told to do that, which is extremely time taking. But ये हुआ एंड मैंने बोला गिव मी सम टाइम टू फिगर आउट. पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, मैं कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लाऊंगी, कितना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. उसके ऊपर इट वॉज रोमिंग अराउंड एंड देन आई थिंक आफ्टर लंच आई मैसेज एंड आई मेंशन्ड दिस. इनिशियली आई मेंशन्ड कि आई माइट प्लान टू डू दिस बाय नेक्स्ट वीक, ये पर्टिकुलर डे या वो पर्टिकुलर डे. बट देन आई वाज लाइक आई शुड ऑल्सो राइट प्रोवाइडेड देयर आर नो हिकअप्स और रोड ब्लॉक्स ऑन द वे. क्योंकि कल का क्या पता यार, मैं जिसको रीच आउट करना चाहूँ, जो डॉक्यूमेंट मुझे मिलना चाहिए मुझे मिला ही नहीं, मुझे मिलेगा ही नहीं, तो उसका मैं क्या करूँगी. सो दैट इज आई वाज वेरी क्लियर कि आई विल सबमिट यू इफ आई गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. इफ आई डू नॉट गेट, आई डू नॉट गेट. देयरफॉर सेटिंग बाउंड्रीज. मैंने ना गूगल करा कि सेटिंग बाउंड्रीज में कुछ चीज़ें हैं यू शुड let me know which I want to talk about. बट गूगल ने मुझे इतना कुछ तो नहीं बोला, जो भी बोला वो आप भी कर सकते हो. मुझे इतना कुछ ग्रेट नहीं लगा ऑनेस्टली, बट 2-3 चीज़ें जो मुझे फील होता है वन शुड डू. सेटिंग बाउंड्रीज जैसे पहले ना यू शुड टॉक टू योरसेल्फ व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक. एज एंड व्हेन यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर यू विल बी एबल टू सेट दोज बाउंड्रीज बेटर. क्यों हम बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते? बिकॉज हमको लगता है मे बी मैं वो कर दूंगी, मे बी मैं उस जगह चली जाऊंगी, मुझे अच्छा ही लगेगा. लेकिन वॉट इफ मुझे अच्छा नहीं लगेगा? हम 50-50 माइंडसेट में रहते हैं. बी वेरी रिजिड विथ योर लाइक बाउंड्रीज स्पेशली एंड से नो व्हेन यू हैव टू से नो. एंड इफ तुमको उस टाइम पे उस इंसान को नो बोलने में शर्म आ रही है या फिर कुछ भी ऐसे स्टेट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट फर्स्ट. ठीक है, मतलब मिरर के सामने जाओ या कुछ बोलो या माइंड में वो सेंटेंस रिपीट करो कि नो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शो अप दैट डे बिकॉज आई एम बिजी. या फिर ऐसे कि आई विल ट्राई माई बेस्ट बट आई एम नॉट श्योर. Things like that, when you commit and do not set that boundary for yourself, people will come back and say that तूने तो मुझे ये बोला था, तूने तो मुझे वो बोला था, हुआ क्या? समझ रहे हो पॉइंट? एंड सामने से पुशबैक भी आएगा, चलना इधर ये कर देना, मेक श्योर यू डू इट. प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबसे आता है. प्रोफेशनल लाइफ में या कलीग्स, पीयर्स, whoever needs your support will talk to you like that. But you should know कि आज के लिए इतना ही. और एल्स लाइक बेस्ट वे टू सेट अ बाउंड्री जो बहुत लोग नहीं करते हैं प्रोफेशनल सेटअप में इज टू लॉग ऑफ. पीपल यूजुअली डू नॉट डू दैट. आई डोंट नो व्हाई. आई विल से कि मैं हमेशा नहीं करती हूँ बिकॉज हमेशा मुझे लगता है द सर्टन थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम मैंने भी मतलब मेरी जो प्रीवियस मैनेजर थी उनके साथ मेरा जब डिस्कशन होता था कुछ चीज़ें ना एट 8 PM 9 PM शी
and she'll ask कि ये please कर देना, वो please कर देना. I'll say, can I please take it tomorrow morning? So that's a boundary that I drew, that I do not want to log in once I've logged off. That is on you. You should be doing that. And make sure you're not rude about it. That is one thing जो मैंने भी अपने notes में लिखा था, I want to talk about. So there is a very thin line between being assertive and aggressive. तो assertive क्या होता है ना? You are very confident, respectful. You use the right words. You are very polite in your tone, pitch, the way you present those sentences, the way you present that dialogue. It has to be very, very, very sweet and polite. It shouldn't come across like you're boastful, you're arrogant. That is wrong. That is clearly wrong. And किसी को भी uncomfortable नहीं feel करवाना तुम्हारे boundaries से. Even though कुछ लोग फिर भी हो जाते हैं upset, you do not have to worry about that honestly. You should focus on the fact that मेरे health के लिए अच्छा नहीं है. Even I would say there are few people जो ना they just suck out your energy. They just come near your personal space and they're like, they'll talk about things, they'll discuss things, they'll talk about other people, things that you do not want to listen. And what do? You usually हम क्या करते हैं? मैं तो बहुत सालों तक ये करती थी, मैं सुनती थी, contribute करती थी conversation में. Lately I realized that I do not want to do that because I'm not interested in that conversation. Just to make that person happy, मैं खुद को उस zone में या खुद को उस questionable discussion में क्यों डालूं? So it's better either you stay silent or else you change the topic. That's it. That's also like setting boundaries. One more thing I think जो cut off वाला चीज़ है, it hurts a lot. But remember that aura, that energy. वो person आया तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के पास, तुम कैफे में मिलने गए, कुछ भी हुआ. घर जब तुम लौटोगे या तुम फिर से जब alone होगे, तुम्हारा energy double up होता है, energy deplete होता है. Sometimes think about that. I have noticed this in my life that few people in my life जब मैं उनको मिलती हूँ ना, मैं खुश होकर मिलती हूँ. आते वो जो एनर्जी लेके आते हैं तुमको ट्रेन करते हैं. वहाँ पे भी you need to set your boundaries. It is very, very, very important to set those boundaries for your own well-being, I would say. So clear steps, understand yourself first. तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, ऑब्जर्व करो, अपने साथ बैठो. लोगों के साथ जब मिलते हो तब ऑब्जर्व करो कि कौन सा एनर्जी तुमको डेवलप करता है और कौन सा एनर्जी डिप्लीट करता है. And then plan your conversations in a way that you do not have to engage with those people or those situations where तुम्हारा energy deplete होता ही जा रहा है. I would say this. And thank you so much for watching. आज के लिए इतना ही. कल के लिए मैं और भी टॉपिक्स लाऊंगी. I have one more topic जो मैं बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली मेरे पास, बट ये सेटिंग बाउंड्रीज आज मुझे आया बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट आई सेड. बाकी there are tough situations going on and I was super tired for the girl who showed up today even though she was feeling dizzy just 10 minutes 15 minutes back. She had to lie down, she had to take rest. You got it, babe. I love you for sure. Thank you.